Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Myself Hiral Lotia from JNP English Medium School. Kids, we completed our session number 1 of chapter number 2, the food factory of plants. Now you getting to know which part of a plant is called the food factory of a plant. Can anybody answer? Yes. Leaf is called the food factory of the plant, right? With the help of PPT, you easily getting to know which part called which name, which picture, right? So all the things about last session is only helping you to understand this chapter very clearly, right? So let's begin today's topic. In today's session, I am going to explain about autotrophs and heterotrophs. Which is called autotrophs and what is called heterotrophs, right? मतलब ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इसी सेशन में explain करूँगी. Then after I am going to explain about parts of a plant. Kids, parts of a plant you know, right? But particularly I am going to explain you about parts of a leaf. What? Parts of a leaf. Here I have drawn a picture of a leaf. Is that clear picture to you? Like आपको दिखाई दे रहा है, right? So these are the things that I am going to explain you in this session, right? So let's begin to explain. Now, every living things need food. Kids, we all are human beings, right? We are animals, birds, plants. So they are called living things. So every living things need food to alive, right? It helps us to grow and carry out daily life activities such as studying, playing and working. We need energy to do work, right? When we get energy, then and then we are able to read, play or any stuff, any kind of stuff. To do any stuff, we need energy, right? So, कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? We need food to get energy, right? Food में से एनर्जी मिलेगी तभी कोई भी हम स्टफ कर पाएंगे, like reading, writing, playing, chopping, anything, right? So we get energy from food. हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? Food में से, right? Some living things make their own food and others obtain their food from different sources. Some kind of living things get food from by their own. ऐसे भी living things है जिसको food जो होता है वो अपने आप में ही prepare करते हैं अपने लिए, right? Living things can produce their own food are known as autotrophs. ऐसे living things जो अपना food खुद produce करते हैं उस टाइप के लिविंग बींग्स को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स. क्या बोलेंगे किड्स? ऑटोट्रॉफ्स. ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं हम उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स. फॉर एग्जांपल, ग्रीन प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फूड बाय देयर ओन सेल्फ, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद बनाते हैं. Now, what is photosynthesis process? That I am going to explain you in other section. But now you should know about this autotrophs and heterotrophs, right? So I hope so you cleared about autotrophs. ऐसे living things मतलब ऐसे living things जो अपना food खुद prepare करते हैं, they are called autotrophs, right? For example, green plants. Living things that depend on others for food are called heterotrophs. There other living things are also there. They are totally dependent on others for food. ऐसे भी living things होते हैं अपने food के लिए दूसरों के ऊपर dependent होते हैं. That type of living things are called heterotrophs. उस टाइप के living things को हम क्या बोलेंगे? Heterotrophs, right?
animals and human beings are heterotrophs. We human beings, animals they are called heterotrophs because we are dependent for food for others, right? Clear? I hope so you understand the difference between autotrophs and heterotrophs. Clear? In plants, the leaf helps to make food. प्लांट में क्या होता है? लीफ जो होता है वो फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, राइट? Let us study about the parts and functions of a leaf. Let me explain you first of all parts of a leaf and what is the functions of a leaf. What is the work of a leaf? We can say that, right? So first of all, parts of a leaf. Observe the leaf of a rose plant or a peepal tree closely. First of all, we need some kind of a leaf to observe. हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सके, ऐसा लीफ चाहिए. So kids, I'll give you 5 seconds. Please go and bring one leaf. If you have a peepal tree या फिर ऐसा रोज प्लांट होगा उसका भी लीफ चलेगा. But you need some kind of a broad leaf, right? चलो 5, 4, 3, 2, and 1. Come back fast. Okay, I think now you all have one leaf in your hand, right? The top surface of a leaf is protected by a waxy coating. Leaf is also protected by a surface that is called waxy coating. उसको भी एक protected surface होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? Waxy coating. देखो किड्स, वो थोड़ा सा स्मूथ होगा, है कि नहीं है? है ना? Then after, this coating protects the leaf and prevents loss of water. It helps to protect the leaf. Leaf को protection देता है वो waxy coating और वो पानी को लॉस होने से भी बचाता है, right? This much clear, kids? The flat part of the leaf is called the leaf blade. लीफ का जो फ्लैट पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? जो फ्लैट सरफेस है लीफ का उसको हम क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड. क्लियर? The tip of a leaf is called the leaf apex. टिप होता है लीफ का कॉर्नर में ऊपर का पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? लीफ एपेक्स. क्या बोलेंगे किड्स? लीफ एपेक्स. जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसको हम लीफ ब्लेड, ऊपर की टिप होती है लीफ की उसको हम क्या बोलेंगे? लीफ एपेक्स. क्लियर? The upper and lower sides of a leaf blades are slightly different in colors. I think you have a leaf in your hand, right? Now observe upper part and lower part. आप उसका upper part भी observe करो और lower part भी observe करो. They have some kind of a slight difference in color. वहाँ पे आपको slight difference होगा color का, दिखाई दे रहा है? अच्छी तरह से observe करो. The upper side is smooth and dark. Upper side होगी वो एकदम smooth होगी और वो dark color की होगी. While the lower side is rough and light. Lower side में वो थोड़ी सी rough भी है और light color भी होगी. दिखाई दे रहा है सबको आपको? There is a thin tube that runs through the middle of a leaf. Leaf की middle में एक ट्यूब है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर का, तो हम उसको क्या बोलेंगे? midrib बोलेंगे. क्या बोलेंगे किड्स? We are going to call it as a midrib, mid-vein, क्योंकि वो मिडल में है और मेन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेन वेन भी बोल सकते हैं और midrib भी बोल सकते हैं. क्लियर? This is called the midrib or mid-vein. Some other small tubes that are attached to the midrib are called side veins. Midrib तो है, इसमें से small veins जो है वो attach हो गई है, वो attach
वो अटैच्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइड वेन्स। क्या बोलेंगे किड्स? साइड वेन्स बोलेंगे। मिड रिब से जो साइड में वेन्स अटैच है, मिड रिब में से ही, वेन में से ही वो साइड में अटैच होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? साइड वेन। साइड वेन्स, क्लियर? These veins help in transporting water, minerals and food to all parts of the leaf and to other parts of the plant. What is the work of that thing? साइड वेन्स और मिड रिब का वर्क ये है कि वो पूरे के पूरे प्लांट को वाटर, फूड और मिनरल्स, ये तीनों चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ ट्रांसपोर्ट मतलब पूरे के पूरे प्लांट को पहुंचाने का काम करता है, राइट? सो द वर्क ऑफ मिड रिब एंड वेन्स इज टू ट्रांसपोर्ट फूड, मिनरल्स एंड वाटर टू होल प्लांट। क्लियर? They provide strength to the leaf and help maintain the shape of the leaf. Leaf blade को मतलब वो लीफ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और शेप को भी मेंटेन रखता है, राइट? The underside of a leaf has many tiny pores called stomata. Leaf की फ्रंट साइड तो हमने देखा, now check it back side of the leaf. It has some small tiny pores. वहाँ पे tiny holes जैसा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे किड्स? हम उसको pores बोलेंगे। क्या बोलेंगे किड्स? We are going to call it as a pores, and that pores we are going to call it as a stomata. उसको हम क्या बोलेंगे? Stomata. Kids, we cannot see that pores by our naked eye. हम हमारी eye से वो pores को नहीं देख सकते। Now what is the work of stomata? क्या कौन सा वर्क होगा स्टोमेटा का? We all living things need to breathe air, right? Through the nose we are breathing air in and out, right? Same as like that, plants also need some air to breathe, right? It inhales carbon dioxide and releases oxygen. And we human beings, what we human beings are doing? We are inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide, right? So, leaf have some kind of pores called stomata. It helps to breathe in carbon dioxide and releases oxygen. Clear? These pores are so small that we cannot see with our unaided eyes. कि हम हमारी अपनी आई से इसको नहीं देख सकते। We need some kind of instrument to see that stomata, right? During photosynthesis, carbon dioxide enters the leaf through stomata. जब भी plants अपना food prepare करता है, whenever plants are preparing their own food, at that same time, carbon dioxide enters the leaf through stomata. Clear? And oxygen and water vapor are released at that same time. Oxygen and water vapor are released through that same stomata. During respiration, oxygen enters and carbon dioxide is released through the stomata. ये respiration की process होती है, at that same time oxygen जो होता है वो release होता है और carbon dioxide जो होता है वो inhale होता है, right? So these are the parts of a plant. About respiration process, about photosynthesis process, like how do plants make food. These are the next topics that I am going to explain you, right? I hope so you clear about parts of a plant. आपको parts पता चल गए plants के? See, the flat part of a leaf is called leaf blade. The middle vein is called main vein or mid-rib, right? And some other tubes which are attached to main vein, they are called side veins. And the tip of the leaf is called leaf apex. Clear? These are so small things that you need to understand. And the back side of the leaf have some kind of a small tiny pores. They are called stomata. Clear, kids? So here I explained you about parts of a plant.
Now let's begin. How do plants make food? Plants अपना food किस तरह से prepare करते हैं? Plants take in carbon dioxide from air and water from the soil. Plants क्या inhale करते हैं? Plants inhale carbon dioxide from air and water from soil. Air में से भी carbon dioxide को inhale करते हैं और even soil में से भी वो ऐसा करते हैं, right? The leaves of green plants contain a green substance called chlorophyll. Kids, आप लोगों ने कभी भी imagine किया why all the leaves are of green color? Have you ever imagined? Have you ever any kind of a question in your mind? क्यों green colors के होते हैं plants? Just because chlorophyll is present in leaf, that's why all the plants have a green color. Some are light and some are dark, but they are all of green colors, right? Chlorophyll traps sunlight. What is the work of chlorophyll? तो क्या chlorophyll है वो sunlight को trap कर देता है, right? Green leaves use the energy of sunlight to prepare food from carbon dioxide and water. वो जो होता है सनलाइट को ट्रैप कर देता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीफ में ऑन हो जाती है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट plants started making their own food. प्लांट्स ये तीनों चीजें जब प्रेजेंट होती है तब वो अपना फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, राइट? Since this process takes place in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. जब ये फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है in the presence of air, water and sunlight, that process is called photosynthesis. This much clear? Now what is photosynthesis? Photo means light and synthesis means preparing or putting together, right? तो लाइट में फूड को प्रिपेयर करना इट मीन्स फोटोसिंथेसिस. क्लियर? सो आपको इजीली पता चल गया हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं. क्लियर? और जो प्रिपेयर करते हैं फूड तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? When they prepare food, that process is called photosynthesis process. In the presence of sunlight, when they started preparing their food for themselves, they are called photosynthesis. Clear, kids, this much? Now let me explain you something about photosynthesis, okay? Photosynthesis is the process by which green plants prepare food in the presence of sunlight. Photosynthesis एक ऐसी प्रोसेस है जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्लांट्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and give out oxygen. जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंटिन्यू होती है ना, at the same time लीफ के पीछे जो स्टोमेटा होता है वो क्या करता है? वो इनहेल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल क्या करता है? ऑक्सीजन. This oxygen is used by animals and human beings to breathe. When they are releasing oxygen in the atmosphere, that oxygen is used by us to breathe in, right? Without air, we can survive in this world? No, we cannot survive in this world without air, right? So trees are so important for us. While we need to live in this atmosphere, right? So we need oxygen. So in this earth, plants are the only one who gives out oxygen. So we need to plant more trees for oxygen. Clear? Plants store their food in the form of starch or glucose in their leaves. Plants जो होती है photosynthesis की process जब continue होती है ना, तब वो they are preparing their own food, right? When they prepared their food, they stored their food as a starch or as in the glucose form. वो starch के form में food को store कर देते हैं या तो फिर वो glucose के form में वो
स्टोर कर देते हैं फूड को। क्लियर? वो कहाँ पे? वो लीव्स में या तो फिर स्टेम में। इज दैट क्लियर? स्टेम पोटैटो इज द बेस्ट एग्जांपल। वो जो पोटैटो होता है उसमें क्या होता है? बहुत सारा स्टार्च होता है। वो जो फूड प्लांट्स ने प्रिपेयर किया है, वी यूज इट एज आवर फूड। एंड देन आफ्टर दैट फेनुग्रीक, these are coriander, spinach, ये जो leaves होता है, they store their food in a glucose form. वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हुआ है, राइट? So we are using it like that. So carbon dioxide plus water in the presence of sunlight, they produce glucose and oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और वो जो जब मिक्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो ग्लूकोज या तो फिर ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन दे आर प्रोड्यूसिंग बोथ द थिंग्स, बट द थिंग इज दैट कि ग्लूकोज को वो स्टोर कर देते हैं अपने ही पार्ट में, और जो ऑक्सीजन है उसको वो इमीडिएटली रिलीज करता है। क्लियर? So this is the simple thing that I want to explain you कि plants अपना food किस तरह से prepare करते हैं photosynthesis की process से in the presence of air, water and sunlight। अगर ये तीनों चीजें साथ में है तो वो photosynthesis की process continue होती है और वो अपना extra मतलब food बनाते हैं और food को starch के form में या तो फिर glucose के form में वो store कर देते हैं। starch के form में like potato और ग्लूकोज के फॉर्म में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कोई भी, राइट? और वो क्या प्रोड्यूस? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड वाटर। क्लियर? आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर सेशन नंबर 2। In session number 3 I am going to explain you about leaf. How do plants use food? So these are the things that I am going to explain you in session number 3. So here we completed our session number 2. Now kids, I have shared a PDF with you of your homework. It is so much easy. You really don't need nobody else. Don't take elders' help. Try to give answers by your own self. I already have provided help box. When I have already help box provided. Still if you need some help, then take help of your book. आप अपनी बुक का हेल्प लोगे and try to find out answers. Okay? So kids, if you like my video, like it, and till next session kids, bye.